Okay, great. First of all, very good morning to each and every one of you. I hope you had a fantastic week and probably are heading for wonderful weekend. So this session is, I'm going to explain you about the basics of listening and the common mistakes that you people are committing in your listening. And we are then going to practice each and every type of question in listening. So all those students who might be having little bit of doubts in listening, they can get it solved. But let me tell you students that listening is probably one of the most easiest of all the modules of IELTS, but at the same time you need to equally practice it. You know, it can be one of the most easiest probably, and providing you practice it properly. And I want each and every one of you to attend this session very sincerely. You need to understand what constitutes right answer, what constitutes wrong answer in listening. Many a times students are not able to get a great score in listening because they don't understand the instructions, they don't read the instructions properly. So मैं चाहूंगा कि ये session बिल्कुल ध्यान से सुने. And let us get started with the listening hints. Very, very important thing. I'm not going to go into the detail of what listening is all about, but we are going to straight away go to the instructions part, which is very, very important. As usual, I want somebody to help me out in reading. Who is going to help me out in reading? Yes, let us get started. Yes, who is going to help me out in reading? I want somebody to help me out because I need somebody to read and then, probably I'll explain. Yeah. So, yeah, who's going to help me out? Jaldi? Yeah, that's great. Yeah, Maya. Let me ask Maya. Okay, Maya, can you read? Hello. Good evening, sir. Good evening, Maya. So I want, we are going to work only on the instructions part of listening, and then we are going to practice out the listening. Okay, great. So these are the important things that you need to understand. Ye instructions bahut important hai. Can you read, Maya? Yeah. Yes, sir. And I want everybody to listen to this very, very carefully. Yeah, please go ahead. Check the instructions to see if you can have a number, which means only one, or numbers plural, which means more than one number. Exactly. How words and numbers are calculated. Okay, sorry to bother you, Maya. आप सबको ये कहना पड़ेगा कि आपने इंस्ट्रक्शंस जब आप रीड करते हो लिसनिंग की, तो ये देखो कि ये नंबर लिखना है या नंबर्स. अगर नंबर लिखना है तो सिर्फ सिंगुलर चलेगा, नंबर्स लिखा है तो प्लूरल भी चलेगा. अब किसको एक नंबर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन लिसनिंग. ओके, गो अहेड माया. A date 1950 is considered one number. A large number 1000500 is considered one word. Exactly. A hyphenated word part-time is considered one word. Okay, sorry, Maya. Now here, 1950, 1000500 is also considered one word. But अगर उन्होंने part time बोला है and instructions में दिया है कि आपको एक ही word लिखना है, and if you written part time without getting it hyphenated, it will be counted as two words. मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जहां पे हाइफेनेटेड करना है वहां पे हाइफन डालना है, वरना इट विल बी काउंटेड एज टू वर्ड्स. और अगर इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा है कि वन वर्ड ही लिखना है और आपने पार्ट टाइम में हाइफन नहीं किया, दो वर्ड काउंट किए जाएंगे, इट विल बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, ग्रेट, वेरी गुड. गो अहेड नाउ. A compound word which is not hyphenated, tennis shoe, is considered two words. Any word which is not, I may stop at the end of instruction. Yes, sir. Yeah. Yes. So tennis shoe is considered to be two words. भले उन्होंने ऐसा बोला कि tennis shoe, अगर वो है तो दो ही वर्ड गिने जाएंगे, अगर आपने हाइफन नहीं किया तो. Okay, then at the hospital or hospital, should you write the article and preposition? Okay. Yeah, now over here many students ask me कि सर मुझे क्या करना चाहिए, should I write at the hospital preposition, मुझे लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए. मैं सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा इसको गौर से सुने. ये डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा है. Yeah, read, go ahead Maya. Your answer will depend on the type of question you have. If you are completing the sentence, for example, the best place to meet is dash, the answer must be grammatically correct, so you need at the hospital. Very good. Second, if the question is a note or form completion, such as place dash, the answer can be just one word with or without the article.
hospital or the hospital if two words are possible. तो काफी बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर मैं क्या करूं, शुड आई राइट एट दी हॉस्पिटल, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, शुड आई राइट ओनली हॉस्पिटल। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। इफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सेंटेंस कंप्लीशन, जैसे कि आप फर्स्ट में देख रहे हो, इन विच आफ्टर पुटिंग द वर्ड यू नीड टू चेक आउट ग्रामेटिक वेदर द वर्ड इज ग्रामेटिकली फिटिंग और नॉट। तो ऐसे केस में द बेस्ट प्लेस टू मीट इज, आपने हॉस्पिटल अकेला लिख दिया, द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर बिकॉज इट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो अगर सेंटेंस कंप्लीशन है तो ग्रामर आपको देखना पड़ेगा, पूरा एट दी हॉस्पिटल लिखना पड़ेगा। दूसरा, अगर नोट या फॉर्म कंप्लीशन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्लेस, तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, ज्यादातर 1 वर्ड 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स दिया होगा। अगर 1 वर्ड दिया है तो सिर्फ हॉस्पिटल लिखे, 2 वर्ड्स दिया है तो दी हॉस्पिटल लिख सकते हो, और अगर 3 वर्ड्स दिया है तो आप एट दी हॉस्पिटल तो आप लिख सकते हो। लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज हियर यू डोंट नीड टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट, सिर्फ हॉस्पिटल लिखोगे तो भी चलेगा। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगा इसमें आप सब लोग ध्यान से देखें। यस, एनी क्वेश्चंस? द न्यू कमर प्रियंका, इज इट क्लियर एवरीबडी? Yes, you can write in the chat box. I want you people to write in the chat box. Is it clear up to this point of time? Everybody, please say yes or no in the chat box. Yeah, great. Very good. Now let us go ahead. आगे बढ़ते हैं, चलिए। Yeah, Maya, can you read? Yes, sir. Yeah, I hope I'm not bothering Answer. you. Yeah. No, sir, not at Okay. all. Yeah. Answers may come quickly. You might get 3 answers in a very short time. Get ready to write your answers down quickly. Answers may come slowly. There may be a gap between answers. Don't panic. This is common in section 4. Okay. In Look, section 4, sorry, in section 4, as you know that the answers are going to be coming continuously. आपको पता होगा section 1 में 1 to 10 questions, section 2 में 11 to 20, 3 में 21 to 30, and in the fourth section you'll be having 31 to 40. ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 31 to 40 जो क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे तो सीक्वेंस में ही, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सीक्वेंस तोड़ेंगे, बट देयर कैन बी ए गैप टू कंफ्यूज यू। हो सकता है 31 और 32 का आंसर जल्दी जल्दी आ जाए और 33 और 35 का आंसर के बीच में काफी गैप हो, सो यू माइट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड। तो एक चीज का ध्यान रखना है, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, देन look out for answers which are plural. IELTS know that students have difficulty hearing the plural s, so these answers will certainly be given to test your listening ability. Exactly. Common problems. First, giving the answer and then changing it. Here is an example. Is it okay to meet at 7 p.m? Oblique. Yes, 7 p.m. works fine for me. Oblique. Oh, I have just remembered I have a late meeting. Could we make it 1/2 instead? The answer was 7 p.m, but then the speaker changed it to 7:30 p.m. Okay. Always keep listening and be ready for the speaker to change the answer. आपने जो लिसनिंग किया होगा आपको सबको पता है कि दे चेंज द आंसर्स एब्रप्टली, पहले वो आंसर देते हैं बाद में चेंज कर देते हैं, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट you are ready for the changes to happen. Okay, now first and the foremost thing, one or two students are telling they are not able to hear. Is it fine? Is my voice audible to everybody? Please say yes or no in the chat box. Is my voice audible, everybody? Okay, great. Yeah, Parth is, yeah, that's it. I just need fast confirmation from your end. Great. So let us go ahead. Okay, great. Sir, yeah. Sir, no display. Yeah. Now, is the display coming? Yes, yes, sir, yes, sir. Okay. Number of words for each answer. अब ये instructions गौर से सुने. No more than 2 words and or a number. Okay, great. तो अगर ऐसा instructions दिया है कि no more than 2 words or and or a number, तो मुझे बता पाएंगे आप में से कोई इसमें से कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है? Can anybody tell me? Just guess. Look at the probable answers and tell me, according to these instructions, which of these answers A, B, C, D is not correct? Yeah, I want answers from everybody. Which of these answers is not correct? इसमें अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे लिखा है नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर, मतलब आप 2 वर्ड्स लिख सकते हो, 2 या 2 से कम, उसके साथ एक नंबर भी लिख सकते हो,
नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. Now this is very important for you to understand. इसमें सारे आंसर सही है. Because if I talk about answer number A, craftsman, this is also correct because it is lesser than 2 words. B, local craftsman, that is also correct because it has got 2 words. C, 60 local craftsmen, तो ऐसे केस में ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 words and a number. यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि 2 words and a number है, उसलिए C करेक्ट है. अगर ऐसा लिखा होता 2 words or a number, then the answer C would have been incorrect. I repeat, and or makes a huge difference in in making sure that your answer is correct or incorrect. और डी भी सही है क्योंकि डी में 60 लिखा है और आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि यू कैन ऑल्सो राइट ए नंबर. अगर यहाँ पे और लिखा होता देन ओनली 6 वुड हैव नॉट बीन करेक्ट. Otherwise, because in this instruction each and every one of the answers are correct. Is it clear everybody? Understood? तो ये चीज का ध्यान रखना, आगे जाके ये प्रॉब्लम ना हो आपको. Okay, fine. Go ahead. You can write answers in lowercase or uppercase. However, I recommend to write answers only in uppercase. There are 2 reasons. A, your answers will look clear. B, you do not need to worry about the first letter to be capital if it is a proper noun. आप एग्जाम में IELTS आपको कुछ भी लिखने के लिए हाँ बोलता है. यू कैन राइट आंसर्स इन लोअर केस, यू कैन राइट आंसर्स इन अपर केस एज वेल. इट इज एब्सोल्युटली ऑन ऑन योर डिस्क्रिप्शन. लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सारे आंसर्स अपर केस में मतलब कैपिटल्स में लिखे. 2 फायदे हैं, आपके आंसर्स क्लियर लगेंगे और आपको वो चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि पहला लेटर अगर कैपिटल है, अगर मिस कर दिया आपने कैपिटल नहीं लिखा कि आपका गलत हो जाए. एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा. फॉर एग्जांपल, या कैपिटल लेटर्स गार्डन है, या गार्डन है, यहाँ पे आप देख सकते हो गार्डन है. तो गार्डन, ये देखिए आपने कैपिटल में लिखा है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगी. जैसे कि गार्डन है और आपने गार्डन लोअर केस में लिखा, इट्स फाइन. बट अगर नाम है मिस्टर ब्राउन और अगर आपने मिस्टर ब्राउन, अगर आप सारी चीजें कैपिटल में लिखते हो, अगर एम और बी कैपिटल नहीं किया, then the answer is going to be marked as the wrong answer. So it is much more advisable, students, that write every answers in capital. Is it getting clear everybody? Yes or no? Understood? So that we can go ahead with the practice sessions now. Okay, great. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let us go with the practice session. Maya, thank you so much for speaking. Let us go ahead now. You should all keep your notebooks ready. We are now going to go for the real practice. Okay. Yeah, can you see a new screen, everybody? Can you see a new screen? Yes, I want to ask each and every one of you, can you see a new screen? Yes, that's great. Now please keep your notebook ready. I'm going to teach you all the listening types. We are going to do practice of all the listening types, which will help you out in getting the right answer. चलिए, पहला है listening type, हम करेंगे form filling. So write down in your notebook, first form filling. Write down form filling. इससे start करेंगे and we are going to do start with the listening of form filling. Action Plan for IELTS by Vanessa Jakeman and Claire McDowell, published by CareerMakers. Yeah, is the voice audible, everybody? Can you listen to the voice, everybody? Yes or no? एक बार बोलना पड़ेगा. Yeah, can you hear the voice? Yeah, that's great. Absolutely fine. Great. Now आप अपने notebook में लिखिए, the first part is form filling. We are going to do form filling and then these are the questions. So in the notebook, write 8, 9, 10 and 11. Write down 8, 9, 10, 11 and you are going to make the practice, habit of writing every answers in capitals. So please write answers in capitals. Let's get started. Is it fine? Have you written 8, 9, 10, 11 in a notebook? If you don't have the notebook, please bring it. I'm willing to wait for you. But you need to have a notebook in front of you and the pen as well. हम सारे question types cover करेंगे. You should get yourself clear with everything. Don't worry. Let me know when you got notebook and pencil at your disposal. Ready? Chaliye, let's get started. Cambridge University Press. This recording is copyright. Listening Section 1. Extract 1. Questions 8 to 11. Good morning, Motor Registry. Oh, good morning. I'd like to arrange a day to take my driving test. OK.
Have you done the knowledge test yet? Yes, I've passed that. I got 99%. Right. What's your name? And I'll just check that on the computer. Oh, no, the computers aren't working right now. You'll have to give me your details and I'll call you back. What's your name? Caroline Black. That's Caroline Black. OK, and your date of birth? 22nd of November, 1984. November the 22nd. Oh, that's today. Happy birthday. 1984. And can you give me a contact number so I can call you back? I'll give you my mobile. It's 0412 129 807. 0412 129. Did you say 811? No, 807. Right, got it. And can you tell me what make and model of car you'll be using for the test? Yes, it's a Ford. A Ford station wagon. It's my dad's car. OK, Ford station wagon. Well, when the computers are working again, I'll call you back with a date for the test. Oh, all right. Thanks. Okay. So are you ready for the answers? You need to tell me the answer of 8, 9, 10, 11. I'm going to give you 10 seconds. In case if you're not written, write it properly. Okay. So what's the answer you got? 8. The answer of 8. Yes. I don't think that, we need to, replay this listening. I don't want to repeat this listening. It is very easy. So I'm not going to do that. What's the answer of 8th one? Everybody. The answer of 8th is Caroline Black. दीपक जी आपका आंसर गलत है. आपने आंसर मतलब स्पेलिंग, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक्स इन योर आंसर. ओके. नहीं माया, आपका भी आंसर गलत है. इट इज कैरोलिन ब्लैक. आई कैन सी मेनी ऑफ यू रिटन द रॉन्ग आंसर. कैरोलिन और ब्लैक दोनों अलग अलग है और उसका स्पेलिंग भी सही होना जरूरी है. डोंट ब्लेम मी बिकॉज ऑफ स्पेलिंग्स यू आर नॉट गेटिंग द आंसर्स. ओके. Date of birth is 22nd November 1984. Date of birth is 22nd November 1984. Then telephone में उन्होंने 0412 के बारे में बोला हुआ था. So you don't need to write about 01412. I'll explain you दीपक जी how to write. आपने सिर्फ लिखना है 129807. And what is the answer of 11th one? Everybody, what is the answer of 11th one? Get me the answer of 11th one. It is Ford station wagon. The answer is Ford station wagon. Everything has to be in capital. Deepak ji, आपका spelling गलत है wagon का. That shows that you are committing mistakes in spellings. So this is going to be your answer, students. ये आपका answer है. It is Ford station wagon. Okay. Now tell me who has got this answers correct. ये आपके answers आपके screen के सामने. You need to check your answers against this answers. Caroline Black. You can write 22nd November 1984 in any one of these 4 ways. मैं सबको बताना चाहूंगा, आप इन चारों में से कोई भी तरीके से आप अपना डेट लिख सकते हो. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हो. देखिए 22nd नवंबर कैसे लिखा है. दूसरे में देखिए 22nd एनडी करके दिया है. नवंबर 22nd 1984, नवंबर 22 1984. काफी बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर डेट को कैसे लिखा जाए. सो एनी वन ऑफ दिस वेज इज फाइन फॉर यू. यू डोंट नीड टू वरी. Or 129807 and Ford station wagon. Clear? So that's great. इसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए. This is a form completion, students. यही एक ऐसी चीज है जहां पे गलती नहीं होने की संभावना है. Okay, great. No issues. Are you ready for the second type of question? हमने कौन सी question type की अभी? Which question type we did? Everybody? This is what we call as form completion. Okay, किसी ने पूछा है कि सर if it didn't leave space in number it is okay. It's fine if you don't leave a space. Don't worry. Okay, great. Let us go ahead. दूसरा है labeling a map or plan. This is also one of the most difficult type of questions that comes. Okay, आगे कर अपने notebook में लिख दीजिए 16, 17, 18 or 19. Write down 16, 17, 18 or 19. Map is considered to be one of the most difficult type of questions in IELTS listening. आज हम वो करेंगे. If you are ready, we can go ahead. Tell me if you are once you are ready when you have written 16, 17, 18, 19. Listening, Section 1. Extract 2. Questions 16 to 19. Excuse me, can you tell me how to get to the library?
Yeah, can you see this new question? Everybody, can you see this new question? 16 to 18 दिख रहा है आपको सबको? Okay, great. So let us go ahead. Library. I seem to have got rather lost. Sure. Well, you're... Listening, Section 1. Extract 2. Questions 16 to 19. Excuse me, can you tell me how to get to the library? I seem to have got rather lost. Sure. Well, you're a little off course. It's about a 10-minute walk from here. Have you got a map? Yes, here it is. Now, let me see. You're here at the moment. I'll put a cross on the map to show you where you are. Thanks. OK. So, you walk along George Street past the Queen Victoria building on your left. We call that the QVB. Oh, I see. Go past the QVB and turn right into Market Street. There's a bank on the opposite corner and a department store on the other corner. So I turn right? Yes, you turn right and walk past a lovely old theatre on your right. That's opposite the department store. That's called the State Theatre. OK, past the theatre and... Then you need to turn left into Pitt Street. That's a pedestrian street with no cars and lots of shops. There are shops along both sides of the street. Oh, yes, I think I've been there before. Walk along Pitt Street until you come to Martin Place. The old post office building is on your left, except that it's not the post office anymore. It's now a big hotel. The post office is gone. Oh, that's a shame. I bet it's an expensive hotel. Probably. I've never stayed there myself. Go across Martin Place and then just continue walking along Pitt Street and you'll come to Hunter Street. Turn right and then walk straight ahead for a couple of blocks until you come to a main road. The library is on the other side of the road, but you can't miss it. Well, thank you so much. Okay, I'm going to give you 10 seconds to write your answers. Let us see. Okay, great. So let us see. Now I want everybody, yes, what's the answer coming? I can see a lot of students are giving me the answers. We'll be doing this listening once again. So don't worry about that part. अगर आपने ये miss किया है तो हम वापस करेंगे. Let me see first of all what answers you have given. Okay. Okay, fine. Not many answers are coming. Yeah, do you find maps to be difficult, students? Everybody, I'll take a special session on maps. So don't worry about that part. But are you finding maps to be difficult? Yes or no? Maps are easy parts. Very good. Okay, great. तो एक काम करते हैं. Let us do this once again. एक बार वापस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी और मैं धीरे-धीरे करेंगे. Okay, great. It's about a 10-minute walk from here. Have you got a map? Yes, here it is. Now, let me see. You're here at the moment. I'll put a cross on the map to show you where you are. Thanks. OK. So, you walk along George Street past the Queen Victoria building on your left. We call that the QVB. Listening, Section 1. Extract 2. Questions 16 to 19. Just a minute. We'll do it again. Excuse me, can you tell me how to get to the library? I seem to have got rather lost. Sure. Well, you're a little off course. It's about a 10-minute walk from here. Have you got a map? Yes, here it is. Now, let me see. You're here at the moment. I'll put a cross on the map to show you where you are. Thanks. OK.
So, you walk along George Street past the Queen Victoria building on your left. या क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग ऑन योर लेफ्ट। अब यहाँ पे 2 एरोज है। मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे गलतियां हो जाती है बच्चों को कि ये 17 का आंसर है। ये 17 नहीं है, देखो 17 का एरो यहाँ पे है। सो यू माइट थिंक दैट 17 इज क्यूवीबी, लेकिन 17 क्यूवीबी नहीं है। क्यूवीबी मतलब क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग ये है, जो 16 है ये मेरा कर्सर आपको जहां पे दिख रहा है वहां पे है। सो 16 का आंसर आएगा क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग। उन्होंने उसका दूसरा नाम दिया है क्यूवीबी। आप दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो भी आंसर इज गोइंग टू बी marked right. So don't not to worry about that part. So answer of 16 is going to be Queen Victoria building. We call that the QVB. Oh, I see. Go past the QVB and turn right into Market Street. Yeah, turn right into Market Street. मतलब यहाँ पे गए और क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग के बाद आपने राइट टर्न करना है। सो यू आर मूविंग इनटू दिस मार्केट स्ट्रीट वाला पार्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। There's a bank on the opposite corner and a department store on the other corner. So I turn right? Yes, you turn right and walk past a lovely old theatre on your right. That's opposite the department store. ओके, तो क्या हुआ? 17 का आंसर क्या आएगा? बिकॉज डिपार्टमेंट स्टोर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ थिएटर। सो आंसर ऑफ 17 इज गोइंग टू बी डिपार्टमेंट स्टोर। इज इट क्लियर एवरीबडी? या क्यूईबी भी चलेगा अंशुल, और क्वींस विक्टोरिया बिल्डिंग भी चलेगा, बट क्यूईबी आप लिख सकते हो। ओके, कमिंग बैक ऑन 17th, तो आंसर ऑफ 17th इज गोइंग टू बी, व्हाट इज आंसर ऑफ 17? इट्स गोइंग टू बी डिपार्टमेंट स्टोर, बिकॉज उन्होंने बोला है कि ये 17 जो डिपार्टमेंट स्टोर है इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ थिएटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। That's called the State Theatre. Okay, past the theatre and... Then you need to turn left into Pitt Street. यहाँ पे That's a pedestrian street with no cars and lots of shops. There are shops along both sides of the street. Oh, yes, I think I've been there before. Walk along Pitt Street until you come to Martin Place. The old post office building is on your left, except that it's not the post office anymore. It's now a big hotel. ओके फाइन। तो यहाँ पे बच्चों ने ये प्रॉब्लम किया होगा कि सर यहाँ ये पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, लेकिन पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज नॉट अ पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग एनीमोर, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ होटल। तो अगर आपने 18 का आंसर पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग लिखा है, दैट इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर। आपको करंट सिचुएशन में वो क्या है वो देखना है। सो 18 का आंसर आएगा, इट इज गोइंग टू बी होटल। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम? एवरीबॉडी पता चला 18 का आंसर क्या आएगा? आंसर ऑफ 18 इज गोइंग टू बी होटल। Initially it was post office building, now getting converted into a hotel. Understood everybody? Yes or no? सिर्फ Maya is giving me the answers. Yes, very good. चलिए, कोई भी डाउट्स हो तो मुझे बता सकते हैं। Now not to worry. We can write big hotel भूपेंद्र लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होटल लिखो, बिकॉज यहाँ पे जरूरत नहीं है। You just need to speak about the place. तो प्लेस आपका है होटल। ओके फाइन, आगे बढ़ेंगे। Post office is gone. Oh, that's a shame. I bet it's an expensive hotel. Probably. I've never stayed there myself. Go across Martin Place and then just continue walking along Pitt Street and you'll come to Hunter Street. Turn right and then walk straight ahead for a couple of blocks until you come to a main road. The library is on the other side of the road, but you can't miss it. Well, thank you so much. उन्होंने बोला कि आप हंटर स्ट्रीट से आगे बढ़ोगे, यू विल कम अक्रॉस मेन रोड एंड लाइब्रेरी इज एग्जैक्टली ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड। यू कैन नॉट मिस इट। यू कैन नॉट मिस इट का मतलब होता है आप उसको नहीं, मतलब ऐसी चीज बहुत बड़ी है उसको आप मिस नहीं कर पाओगे, मतलब मिस नहीं होगी आपसे। सो आंसर ऑफ 19 इज गोइंग टू बी लाइब्रेरी। अंडरस्टूड नाउ? सो आंसर ऑफ 16 इज गोइंग टू बी क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग या तो फिर क्यूवीबी। 17 इज डिपार्टमेंट स्टोर। 18 इज होटल जो यहाँ पे थी, जो पहले पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग हुआ करती थी, और बाद में आप अगर यहाँ पे आते हो मेन रोड आता है और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है लाइब्रेरी। सो आंसर ऑफ 19 इज गोइंग टू बी लाइब्रेरी। अंडरस्टूड नाउ? एवरीथिंग इज क्लियर? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ओके फाइन। सो दिस आर द आंसर्स, यू कैन चेक योर आंसर्स। ऐसे आपको आंसर लिखना है कैपिटल्स में, यही ऐसे लिखना है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू राइट द आंसर एग्जैक्टली द वे इट इज गिवन ओवर हियर। इसके आजू बाजू आपने कुछ भी लिखा है तो आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर। प्लीज चेक, टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। मैंने देखा काफी लोगों ने क्वींस का एपोस्ट्रोफी एस किया है, दे रिटन क्वींस विक्टोरिया बिल्डिंग, दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग आंसर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? शैल वी गो अहेड नाउ? चेक योर आंसर्स।
ये लिस्टिंग पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा. इन केस इफ यू वांट टू अगेन प्रैक्टिस नेक्स्ट वीक, यू कैन वेरी वेल गेट दैट, सो डोंट वरी. ये इसका पूरा रिकॉर्डिंग ही हो रहा है. ओके, आगे बढ़ते हैं. थर्ड ही सेंटेंस समरी एंड कंप्लीशन. मैं चाहूंगा आप अपने नोटबुक में लिखो 3 to 6. ये भी डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट है. राइट डाउन 3 to 6 इन योर नोटबुक. Listening Section 2. Extract 1. Questions 3 to 6. Yeah, can you see the new screen in front of you, students? 3 to 6 दिख रहा है आप सबको? Can you see 3 to 6 in your notebook? I mean on your screen? Very good. So let us go ahead. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ये लाइट हाउस के बारे में पूरा एग्जाम्पल है. बेल रॉक लाइट हाउस. लाइट हाउस का मतलब क्या होता है? What is the meaning of light house? Yeah, you must be all knowing about lighthouse. Yeah, so let us do the listening based on this. Questions number 3 to 6. On today's programme about great buildings of the world, I'm going to talk about the Bell Rock Lighthouse, perhaps one of the greatest engineering feats of the 19th century, and I'm sure you'll agree that this is a fascinating story. It's nearly 200 years since the lighthouse was first built, and when you look at where it's situated, you'll see why this was such a remarkable achievement. The Bell Rock Lighthouse, also known as Stevenson's Lighthouse, after the engineer who built it, is 11 miles off the east coast of Scotland in the North Sea. It consists of a white stone tower over 100 feet high, that's over 30 metres high, and it rises out of the sea, apparently without any support. It is a truly amazing sight. But in fact, despite what it looks like, the tower is actually built on a sandstone reef which lies just under the waves. Because the Bell Rock is under water for so much of the time, it has always presented a great danger to shipping, and many ships were lost over the centuries. And it has also presented a huge engineering challenge, for it's no easy business to build a lighthouse under such conditions. In the first year of construction, work could only take place in the summer months, when the tide was low. And it is a credit to Stevenson and his colleagues that this incredible structure has not required a single repair to its stonework since the day it was completed in 1811. Yes, answers. So answer of third, fourth, fifth and sixth. I want the answers of third, fourth, fifth and sixth. ये difficult है थोड़ा सा. It was difficult. Okay, fine. So let us read, do it. Shall we do it again? Shall we do it again? छोटा सा है लेकिन छोटा. Yeah, let us do it again. Listening Section 2. Extract 1. Questions 3 to 6. On today's programme about great buildings of the world, I'm going to talk about the Bell Rock Lighthouse, perhaps one of the greatest engineering feats of the 19th century, and I'm sure you'll agree that this is a fascinating story. It's nearly 200 years since... So answer of third is going to be 200 years. आपको 200 साल लिखने पड़ेंगे. सिर्फ आपने 200 लिखा, the answer is going to be marked as a wrong answer. So answer is going to be 200 years. Okay. हीरल आपका एक आंसर गलत है. Let us see. Okay. दो आंसर गलत है एक्चुअली तो. Okay, आगे बढ़ेंगे. The lighthouse was first built. And when you look at where it's situated, you'll see why this was such a remarkable achievement. The Bell Rock Lighthouse, also known as Stevenson's Lighthouse, after the engineer who built it, is 11 miles off the east coast of Scotland in the North Sea. It consists of a white stone tower. It consists of a white stone tower. मतलब टावर जो है white stone से बना हुआ है. So answer of fourth is going to be stone or white stone. 3 का आंसर है 200 years and 4 का आंसर है white stone. I don't know how many of you got this answer correct. So answer of fourth is white stone. आगे बढ़ते हैं.
over 100 feet high. That's over 30 metres high. And it rises out of the sea, apparently without any support. It is a truly amazing sight. But in fact, despite what it looks like, the tower is actually built on a sandstone reef, which lies just under the waves. ये सोचने वाली बात है कि इतना सारा बोला है लेकिन एक भी आंसर नहीं आया. सो मैंने पहले भी बताया था कि लिस्निंग में ऐसा हो सकता है. यू माइट हैव आंसर्स कमिंग इन वेरी क्विक सक्सेशन एंड यू माइट ऑल्सो हैव अ बिग गैप बिटवीन द आंसर्स. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. द आंसर विल कम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर बट देयर कुड बी गैप बिटवीन द आंसर्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए ये लोग ऐसा बोलेंगे, बिकॉज से स्टार्ट करेंगे. बिकॉज इट इज डैश द रीफ इज प्लेसिंग अ डेंजर, ऐसा कुछ बोलेंगे. देखो सेंटेंस फ्रेजिंग कर दिया उन्होंने, पैराफ्रेजिंग कर दिया. बिकॉज इट इज से स्टार्ट करेंगे ये आंसर. लेट अस सी. Because the Bell Rock is under water for so much of the time. Because the Bell Rock is underwater. So answer of this fifth is going to be underwater. उन्होंने ऐसा बोला because the it का मतलब Bell Rock lighthouse is underwater. It places a danger. Yeah. Time, it has always presented a great danger to shipping, and many ships. Yeah, understood now. The answer of fifth is going to be underwater. Understood everybody? Yes or no? Have you understood why the answer is underwater now? See how they are changing the answers. Great. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Ships were lost over the centuries. And it has also presented a huge engineering challenge, for it's no easy business to build a lighthouse under such conditions. In the first year of construction, work could only take place in the summer months. Initial part में work सिर्फ और सिर्फ summer months में हुआ. The answer of 6 could be summer or it could also be summer months. दोनों में से कोई भी आंसर होगा तो चलेगा. So these are the answers. Kindly check out your answers, across the answers that you have written. Third का answer 200 years. Fourth का white stone या सिर्फ stone होगा तो चलेगा. Fifth is underwater, under the waves, लेकिन underwater बेहतर है. Sixth is going to be summer or summer months. How many of you got all answers correct? Can you help me out? How many of you got all answers correct? Yes, all answers. तो बहुत अच्छी बात है. अगर सारे आंसर्स करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड. Many of you are getting all answers correct. एक आध दो को एक आध गलतियां हुई है. That's fine, not an issue. चलिए आगे बढ़ते हैं. Yeah, I hope you are enjoying everybody. Yes, you should enjoy the listening. Listening में ही एक ऐसी चीज है जहां पे स्ट्रेस नहीं है. So you should enjoy this. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let us move ahead. हमने ये अभी जो किया, this was sentence completion. Now we are going one step further. Table completion, again a very easy form of IELTS listening. पहला था फॉर्म कंप्लीशन, ये जो है वो टेबल कंप्लीशन है. ये भी एक बहुत इजी है. या समर मंथ्स कर सकते हो इफ यू आर नो. या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्चना करके वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज आस्किंग कि अगर सर हम अनश्योर है, हमें पता नहीं है कि समर है या समर मंथ्स है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि समर ऑब्लिक समर मंथ्स? ऐसा आप नहीं कर सकते. अगर आपने दो आंसर्स लिखे तो आंसर दोनों गलत हो जाएंगे. तो आपने में इसमें से एक ही आंसर लिखना है, या तो फिर आप समर लिखे या तो फिर समर मंथ्स. अंडरस्टूड? ओके ओके, आगे बढ़ेंगे. टेबल कंप्लीशन, राइट डाउन 10, 11, 12 इन योर आंसर्स. 10, 11 and 12. Months is not required to be written in bracket. Bracket आपको नहीं करना है स्टूडेंट्स. You don't need to write answers in bracket. आपने सिर्फ ओपन ही लिखना है. Okay, now write down 10, 11, 12. ये आपका टेबल है. I'll start the listening then. Written 10 and 11, 12 in your notebook. Yeah, चलिए. Listening Section 2. Extract 2. Questions 10 to 12. Thank you for calling the Rialto Family Cinemas. The following information is for Saturday. Okay, I am not going to repeat this listening because ये टेबल है, easy है. मैं चाहूंगा आप लोग इसको बिल्कुल गौर से सुन के ही इसका आंसर दे. Otherwise, we won't be able to complete everything. Clear? The 3rd of February. Please collect reserved tickets 15 minutes before the commencement of the film. In Cinema 1, we are showing Shrek 2, the sequel to the smash hit Shrek. One performance only this morning at 11:15. This is an animated fairy tale suitable for all the family.
In Cinema 2, we have the award-winning documentary The Long Journey, commencing at 6:15 p.m. Don't miss this extraordinary first-hand account. In Cinema 3, by popular demand, the Jackie Chan favourite Armour of God, commencing at 5:30 p.m. with a repeat performance at 9:15. This is Jackie Chan at his best in a classic action film. चलिए, what is the answer of 10-1? मुझे लग रहा है काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सर ये क्या बोला था. What is the answer of 10th? Everybody, what is the answer of 10th? Yeah, I can see. No, देखो काफी लोगों को पता ही नहीं है कि quarter-past-11 कैसे बोला जाए. Quarter-past-11 का मतलब होता है, quarter-past-11 का मतलब होता है 11:15. तो आपको 11:15 लिखना है. Everybody, you need to write 11:15. Let me tell you students, 30:11 का मतलब होता है 11:30. और quarter-past-11 का मतलब होता है 11:15. So you need to make sure you are writing 11:15. Don't write quarter-past-11. ये नहीं लिखना है आपको. You need to have this knowledge. मैं वापस कहना चाहूंगा जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है इसका, quarter-past-11 का मतलब 11:15, 10:30 का मतलब 10:30, 11:45 का मतलब 10:45. Is it clear everybody? Quarter-past-12 का मतलब क्या होगा? What is the meaning of quarter-past-12? Yes everybody, what's the meaning of quarter-past-12? Quarter-past-12 का मतलब क्या होगा? 12:15. What is quarter-to-12? What is quarter-to-12? नहीं, quarter-to-12 की बात कर रहा हूँ. 11:45. Quarter-to, अगर quarter-to बोलता हूं तो 15 मिनट कम कर दो, और quarter-past बोलता हूं तो 15 मिनट ऐड कर लो. So answer of 10th is going to be 11:15. Okay, then 11th का आंसर पूरा ऐसा लिखना है आपको, the long journey. If you have written long journey alone, it is going to be marked as a wrong answer. पूरा लिखना पड़ेगा the long journey. This is the name of the film. So you cannot avoid the article. यहाँ पे article आपको नहीं छोड़ना है. So the answer is going to be the long journey. And 12th is going to be classic action film या तो फिर action film. इसमें से कोई भी होगा तो चलेगा. classic action film लिखोगे तो भी चलेगा, action film लिखोगे तो भी चलेगा, but action होना जरूरी है. So this is how it is going to work like. So देखिए ये आप क्या, you want me to play this again or is it fine? Do you want me to play this again? Yeah, do you want me to play this again? Is it fine na? So it's fine. Yeah, that's fine. Okay, no, it's fine. Great. चलिए, हेमाली बोल रही प्ले अगेन करना है, 2 मिनट लगेंगे. एब्सोल्युटली फाइन. चलिए आगे जाते हैं. थोड़ा इजी है. यू कैन लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग वंस अगेन व्हेन आई विल बी पोस्टिंग दिस ऑन द नेट. या प्लीज रिपीट 12. 2-3 लोग बोल रहे रिपीट कीजिए. 2 मिनट रिपीट कर लेते. चलिए 1 ही मिनट का है. लेट अस रिपीट दिस. Please collect reserved tickets 15 minutes before the commencement of the film. In Cinema 1, we are showing Shrek 2, the sequel to the smash hit Shrek. One performance only this morning at 11:15. This is an animated fairy tale suitable for all the family. In Cinema 2, we have the award-winning documentary The Long Journey, commencing at 6:15 p.m. Don't miss this extraordinary first-hand account. In Cinema 3, by popular demand, the Jackie Chan favourite Armour of God, commencing at 5:30 p.m. with a repeat performance at 9:15. This is Jackie Chan at his best in a classic action film. Okay, fine. So these are the answers, students. ये आपको समझना पड़ेगा. देखिए पहले का आंसर है 11:15 AM. Must have AM और morning, मतलब आपको 11:15 AM लिखना पड़ेगा. This is important. Okay. दूसरा है 11th का आंसर the long journey. This is going to be the answer. Yeah, the long journey. So this is going to be answer of 11. Yes, Jamie, noted. 12th का आंसर है क्लासिक एक्शन फिल्म. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए इसका ये समझ लो इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ये है कि ये एक्शन तो कंपलसरी होना ही चाहिए. अब इसके साथ आपने लिखा क्लासिक एक्शन, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी मार्क्ड एज राइट. या क्लासिक एक्शन लिखा तो भी चलेगा, एक्शन फिल्म लिखा तो भी चलेगा, और क्लासिक एक्शन फिल्म लिखा तो भी चलेगा. ब्रैकेट वाली जो चीज है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन ब्रैकेट बगैर की जो चीज है वो कंपलसरी है. आप जब एग्जाम में लिखते हैं तो अब आप ब्रैकेट नहीं करोगे. यू आर नॉट गोइंग टू राइट द ब्रैकेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
सिर्फ एक्शन लिखा तो भी चलेगा। आई रिपीट, आपको ब्रैकेट एग्जाम में नहीं करना है, मतलब अगर आप क्लासिक एक्शन फिल्म लिखते हो एग्जाम में तो आप ऐसे ही लिखोगे। लेट मी राइट इट ओवर हियर फॉर यू। So you are not going to write a bracket in the real examination. You can also write classic action or you can also write action film. ये कोई भी आंसर होगा तो चलेगा, there is nothing to worry. Or you may even write only answer as film action. Sorry, ये दोनों तीन आंसर सही है. You don't need to worry. Clear everybody? Yeah, sure. Anybody who has got the examination can always call me. They are most welcome to help me out. Yeah, I mean, they can call me and I can get this query solved. मैं सबको ये बताना चाहूंगा एग्जाम वालों को जिन्होंने एग्जाम ली है सितंबर में, they can come down at our main branch, जहां पे आप 5 से 7 के बीच में आ सकते हो. If you have got any queries, आप सुबह भी आ सकते हो. 10 से 12 की बैच है, 8 से 10 की बैच है. अगर आप आ सकते हो तो, अगर नहीं आ सकते तो well and good. If you have got the examinations in near future, you can come at Ashram Road branch and you can get your queries solved. You don't need to worry. आप speaking भी करवा सकते हो अपना. Nothing to worry. Okay, shall we go ahead now? Okay, short answer questions. एक और करते हैं. Short answer questions. Now write down 14, 15 and 16. ये भी difficult है. 14, 15 and 16. This is short answer questions. Let us see whether you are getting the right answer or not. चलिए. Yeah, Mahima, you can call me on Monday. Listening, Section 2. Extract 3. Questions 14 to 16. Welcome to the City Art Gallery and to our gallery audio tour. The gallery was first established in 1875 and is now one of the city's most popular attractions. The building has undergone a number of changes over the years, the most recent addition being the extension on the ground floor, which was opened in 1988. The gallery houses some of the finest works of art in Australia, including Aboriginal, European and Asian paintings. There is a comprehensive Australian collection, which includes works from the early colonial period to the present day. In addition to the paintings on display, we have an excellent collection of photography, with photographs dating from the 19th century. As well as the permanent collection, which you will see throughout the building, the art gallery has a varied and exciting exhibition program, with approximately 30 changing exhibitions each year. Many of these exhibitions are accompanied by films and lectures, or occasionally by concerts. Now, let's begin our tour in the 19th century Australian room. Okay, so what is the answer of 14, 15 and 16? Everybody, let's see what's the answer. 14 का आंसर क्या है? On which level is the new section located? नए कौन से लेवल पे नए सेक्शन को लोकेट किया गया है? आंसर इज गोइंग टू बी ग्राउंड फ्लोर. आंसर स्पेलिंग सही होना चाहिए. The spelling, of the word should be absolutely correct. Answer is going to be ground floor. Okay. Then what does gallery exhibit besides painting? Can you tell me, help me out? Besides के बदले उन्होंने कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया था? Besides के बदले कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया था उन्होंने? याद आ रहा है? Besides के बदले in addition, याद आ रहा है? In addition बोला था उन्होंने. In addition, तो answer is going to be photography और फिर photographs. So answer of 15 is going to be photography या फिर photographs. और यहाँ पे आपको दो आंसर लिखने हैं. उन्होंने दो आंसर को बारे में बोला है, तो दो आंसर में से उन्होंने बोला है फिल्म्स, लेक्चर्स और कॉन्सर्ट्स. तो इसमें से दो आंसर आपको लिखने हैं. सो आंसर इज गोइंग टू बी फिल्म्स, लेक्चर्स और कॉन्सर्ट्स. इसमें से आपको कोई भी दो लिखना है. यू डोंट नीड टू राइट ऑल ऑफ देम, यू ओनली नीड टू राइट टू ऑफ देम. अंडरस्टूड? सो आंसर इज गोइंग टू बी फिल्म्स और लेक्चर्स और कॉन्सर्ट्स. ये आपके आंसर्स है. काइंडली चेक इट आउट. Done, everybody? Is it fine? I don't need to repeat this. Very good. Spelling has to be correct. Yeah. Now there are one or two questions. मैं सबको ये again एक चीज कहना चाहूंगा. You might be surprised to know that we have got all visas this time. Our visa ratio is fantastic, students.
तो इस बार वीजास बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा, अभी कनाडा बहुत वीजास दे रहे हैं। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज पे देखोगे, काफी बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा अगर आप 6 6.5 बैंड ला देते हो, एकेडमिक वाला बच्चा है तो उसको वीजा मिलना ही है। आई मीन बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू सी दैट यू गेट द वीजाज। मैं चाहूंगा जिनको जनवरी में जाना है वो सितंबर में ज्यादा से देर चाहूंगा, चाहे तो अगस्त में ही ले सकते हैं, लेकिन अगर अगस्त में डेट लेते हैं तो बेहतर है। लेकिन बाय लेट, लेटेस्ट बाय यू शुड टेक द डेट्स इन सितंबर इफ यू आर प्लानिंग टू गो इन जनवरी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग नहीं आ सकते, मैं चाहूंगा अगर आ सकते हो तो बेहतर है, स्पीकिंग के लिए तो बेहतर होगा। नहीं आ सकते तो विल अरेंज अ सेशन फॉर देम टू डू द स्पीकिंग speaking online, so don't worry. Clear? And if you want to meet me, I am always there in the morning at Ashram Road branch and the evening at Gurukul branch. So I am in the at Ashram Road branch up to almost 1:30 a.m. sorry 1:30 p.m. and in the Gurukul branch from 4 to 7 p.m. So you can come and meet me in case if you got any doubts or queries. Okay? Yeah, not an issue. You can always call me, not an issue. अगर जनवरी में जाना चाहते हो तो जितनी हो सके उतनी जल्दी दो। ओके, चलिए अगर आप आगे बढ़ते हैं, लेट अस डू दिस लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बिफोर वी गो अहेड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चलिए लिख दीजिए। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वंस, ओनली एक ही है। अब मैं चाहूंगा इसमें देखते हैं किसका सही आंसर आता है। लेट अस सी हु गेट्स दिस आंसर राइट। 7, और इसके लिए मैं चाहूंगा आप रीड करें। somebody let you read it out for me. Yes, who is going to help me out reading this? Yes, या जल्दी, या कैन यू, या jaldi, can you read? Okay. Yes, Now, sir. yeah, now before I go ahead, before jaldi goes ahead with reading the answers, I mean questions and the answers, मैं सबको बताना चाहूंगा कि IELTS लिस्टिंग में सबसे अगर कोई डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन रीड करनी पड़ती है। सी यू कैन सी, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन 7। या रीड, कैन यू रीड जल्दी? Yes, 7, sir. yeah. Why do flamingos in captivity need to eat algae? Okay, flamingos in captivity का मतलब क्या होता है? What's the meaning of captivity? They are not in wilderness. They They are are in kept zoo. in cage. Captivity का मतलब होता No. है zoo, zoo में। Is it getting clear? In a closed place. Understood? They are not in the wild. They are in a close enclosure. Okay? Yeah. A, answer of A. A, to ensure they remain healthy. B, to supplement their diet. C, to keep their bodies pink. ओके, फ्लेमिंगोस को कैप्टिविटी में मतलब जू में, मतलब जहां पे उनको रखा है, उनको आलगी खाने की जरूरत क्यों है? ए ऑप्शन है टू एंश्योर दे रिमेन हेल्दी, ताकि वो हेल्दी रहे। बी, टू सप्लीमेंट देयर डाइट, अब उसके डाइट में थोड़ा सा सप्लीमेंट आए। और तीसरा, उनकी बॉडीज को पिंक रखा जाए। नाउ लेट अस लिसन टू दिस एंड फाइंड आउट व्हाट्स द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आई वांट एवरीबॉडी, या थैंक यू ऑल, जल्दी। Listening, Section 3. Extract 1. Question 7. So, flamingos in zoos need to eat algae, do they? Why is that? Well, for a long while, flamingos living in captivity, for example in zoos, kept losing their delicate pink colour and fading to white. Then the zookeepers realised the problem was due to the birds' diet. Weren't they getting enough food? No, that wasn't the problem. It was that in the wild, flamingos feed on a certain kind of algae containing chemicals called carotenoids, which give the birds their distinctive colour. Yeah, what is the answer? Who's going to tell me the answer now? Yes, everybody. क्या बात है, काफी लोगों के आंसर सही है। वेरी गुड। नो जल्दी। आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी सी। सी आंसर है इसका, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा क्यों है। द आंसर इज ओनली गोइंग टू बी सी। उनको ये सवाल पूछा जाता है कि क्यों फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी जो है वो पिंक क्यों रहती है, क्योंकि वाइल्ड में वो जो गालगी खाते हैं जहां पे कैरोटेनॉइड्स होता है, जिसके कारण उसकी कलर जो होता है स्किन का वो पिंक हो जाता है। उसी के लिए जब वो एनक्लोजर्स में रखे गए तो उनका ये कलर जो था वो फेड होना चालू हो गया। तो जू वालों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में उन्हें पता चला कि ये जो कलर जो उनका आता था वो बाहर आलगी खाने से आता था, जिसमें कैरोटेनॉइड्स होते हैं। तो आंसर होगा उसका सी। इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबॉडी? डू यू वांट मी टू रिपीट इट और इज इट फाइन? द आंसर इज गोइंग टू बी सी। Yes, everybody understood?
Yeah, great. So answer is going to be C. Okay, fine. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let us go ahead now. Answer is going to be C. 7 का आंसर है C. Okay. Now let us go for labeling a diagram. ये सबसे difficult है. This is going to be the last exercise that we are going to do. ये difficult है. Let me see who gets this right. अपने notebook में answers लिख दो 16, 17 and 18. This is a labeling a diagram. Write down 16, 17 and 18. और आपको आंसर्स निकालने हैं. You need to get the answers from A, B, C, D, E, F. तो आपके आंसर फर्स्ट करो कि 16 का आंसर मेटल फ्रेम है, तो आपको मेटल फ्रेम नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना है ए. अंडरस्टूड? लेट्स सी. चलिए, आर यू ऑल रेडी? रिटन 16, 17, 18. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. Listening Section 3. Extract 2. Questions 16 to 18. I believe researchers are exploring the idea of a padded car to reduce injuries and accidents. Can you tell us something about what it will be like? Yes. Well, the car will be covered in plastic cells filled with air, moulded round a conventional metal frame. I see. So the plastic cells will allow cars to bounce off each other. Exactly. And you'd also be able to see what's just behind you on the road because there's a camera mounted on the back. Any other innovations? The doors will open upwards and out, giving the appearance of a wing when open, and the wheels will go in all directions to assist in heavy traffic. And to guide motorists away from traffic jams and help them find a parking spot, the car will be fitted with a computer near the steering wheel. Where the driver can see it, of course. Yes. There's also a hook to allow novel parking techniques. Oh, it sounds amazing. Yeah, what's the answer now? बिल्कुल ध्यान से. Let's see who gets all answer right. मेरे पास एक ही आंसर. Yeah, I can see that very few of you, have got all answers correct. Very few of you have got all answers correct. I'm going to repeat it, but मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों को आंसर्स गलत आए हैं. काफी लोगों ने सेकंड में जो गलती है कर दी है. Okay, let us see it. Let us do it once again. चलिए वापस करते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको भी. Let us see. Listening Section 3. Extract 2. Questions 16 to 18. I believe researchers are exploring the idea of a padded car to reduce injuries and accidents. Can you tell us something about what it will be like? Yes. Well, the car will be covered in plastic cells filled with air, moulded round a conventional metal. So 16 का आंसर है प्लास्टिक सेल्स, क्योंकि सेल्स है. एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे 2 एरो है, ये भी आपको ध्यान रखना है. 2 एरो है और इसमें से एक ही एक सी चीज है जो प्लूरल में है. सो प्लास्टिक सेल्स है और यहाँ पे 2 एरो है. सो 16 का आंसर आएगा सी. एनी डाउट्स इन दिस एवरीबडी? एनी डाउट्स ऑन दिस एवरीबडी? क्लियर हो गया आपको? सो आंसर इज गोइंग टू बी 16 का आंसर होगा सी. क्लियर? ओके, देन आगे बढ़ते हैं. चलिए. या थैंक यू या frame. I see. So the plastic cells will allow cars to bounce off each other. Exactly. And you'd also be able to see what's just behind you on the road because there's a camera mounted on the back. Okay. यहाँ पे काफी लोगों ने गलती की है. यहाँ पे ऐसा सोचा है लोगों ने कि 18 का आंसर है कैमरा माउंटेड एट द बैक. तो काफी लोगों ने यहाँ पे आंसर इसका जी लिख दिया है. 18 का आंसर जी. लेकिन समझने वाली बात है, पहले तो ये समझना है कि 16 के बाद 17 का ही आंसर आएगा. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि 16 के बाद 17 का ही आंसर आएगा. और 17 तो यहाँ पे एरो दिया है. एंड देयर इज अ कैमरा माउंटेड एट द बैक. तो बैक ये जो है, यहाँ पे कैमरा आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे इसका तो कोई एरो ही नहीं है. दैट मीन्स कैमरा इज ऑप्शन फॉर नन ऑफ द क्वेश्चंस. क्लियर? सो 18 का जी नहीं आएगा. काफी लोगों ने इसका आंसर जी दिया है. ये समझने वाली बात है. ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Any other innovations? The doors will open upwards and out, giving the appearance of a wing. So doors will open up and out, giving the appearance of the wing. तो wing वाला appearance तो यही है. So 17 का आंसर आएगा D. So answer of 17 is going to be D. Understood everybody?
ओके ग्रेट. सो 16 का आंसर है सी, 17 का आंसर है डी. ओके आगे बढ़ते हैं. when open, and the wheels will go in all directions to assist in heavy traffic. And to guide motorists away from traffic jams and help them find a parking spot, the car will be fitted with a computer near the steering wheel. Where the driver can... So car will be fitted with a computer near the steering wheel. तो ये आप देख सकते हो ये एरो भी स्टीयरिंग व्हील की तरफ इशारा करता है. So answer of 18 is going to be computer. So answer of 18 is going to be E. So ये आपके आंसर्स है. Answer is of 16 is going to be C, 17 is going to be D, and 18 is going to be E. How many of you got all correct answers? I would like to know. How many of you got all correct answers? क्या बात है, काफी लोगों के करेक्ट आए हैं. वेरी नाइस. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? कोई बात नहीं, एक आध गलत होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीखने वाली बात है. सो देयर इज नथिंग टू वरी. ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? ओके, आगे करना है. देयर आर 1 or 2 क्वेश्चन टाइप्स मोर. सो वुड यू लाइक टू डू इट और इज इट फाइन? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू इट. Then it is note completion. This is note completion. Okay. अपने नोटबुक में लिख दीजिए 5 और 6. सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस है, 5 और 6 करना है. चलिए 5 और 6 लिख दीजिए. गो थ्रू दिस. पहले एक बार देख लो इसको. ये लास्ट करते हैं, उसके बाद विल स्टॉप. Listening Section 4. Extract 1. Questions 5 and 6. Did you know that within the nucleus of each of your cells is a set of instructions for building you from scratch? Amazingly, if you could stretch it out, this string of acid, or DNA as it is known, would be about 3 feet long. But in fact, it's tangled up like a ball of string. Various parts of the string incorporate between 50,000 and 100,000 separate genes. A human individual's complete set of genetic material is known as the human genome. And interestingly, the human genome is not the biggest one around. Surprisingly enough, your genome has a lot in common with other animals and plants. Nonetheless, your DNA sequence is uniquely yours. चलिए, what is the answer of fifth one? Everybody, what's the answer of fifth one? Answer is going to be ball. बहुत सिंपल था ये. Ball of string. माया पूरा लिखना पड़ेगा आपको. Answer of fifth is going to be ball of swing. नहीं है हिमाली, string है. string, ball of string, string, string. और 6 का आंसर है other animals, और बाद में लिखना पड़ेगा plants. So answer is going to be other animals and plants. Understood? Okay, so this is going to be your answer. ये आपका आंसर है. मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ. 5th का आंसर है ball of string and 6th का आंसर है other animals. आप अपने नोटबुक में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का आंसर है, आप लिखोगे other animals, plants. Any questions, any doubt students? ये सिंपल था, so I'm not playing it again. Okay, आगे बढ़ते हैं. Note completion, 9th question. Note completion. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Right, question number 7, 8 and 9. Please write in your notebook 7, 8 and 9 and I'll play it. ये है note completion. Listening Section 4. Extract 2. Questions 7 to 9. Lonely Planet is one of a number of highly successful publishers of travel books. The company is based in Australia, but also has offices in a number of other countries. The travel guide business is a highly competitive market, and so to compete, they have adopted a range of marketing strategies. One thing they excel at is tracking individual customers, which in turn allows them to measure how well their marketing is working. They've also licensed the name Lonely Planet to a TV program of the same name as part of their overall strategy. चलिए 7, 8 and 9. What is the answer of 7, 8 and 9? चलिए पहले करते हैं 7. What's the answer of 7th one?
What's the answer of 7th one, everybody? I want to get answers from everybody. Yeah, answer of 7th is going to be Australia. Yeah, the answer of 7th is going to be Australia in capitals. 8th, ये थोड़ा सा करते हैं, छोटा सा है, एक काम करते हैं, इसको वापस प्ले करते हैं 8th के लिए, चलिए. Listening Section 4. Extract 2. Questions 7 to 9. Lonely Planet is one of a number of highly successful publishers of travel books. The company is based in Australia, but also has The company is based in Australia. So answer of 7th is going to be Australia. चलिए आगे बढ़ते offices हैं. in a number of other countries. The travel guide business is a highly competitive market, and so to compete, they have adopted a range of marketing strategies. उन्होंने बोला कि adopted a range of marketing strategies. यहाँ पे लिखा है variety of, तो वही तो है range of. So answer of 8th is going to be marketing strategies. आपको पूरा लिखना पड़ेगा marketing strategies. आपने सिर्फ marketing या सिर्फ strategies लिख दिया, आंसर गलत होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. One thing they excel at is tracking individual customers, which in turn allows them to measure how well their marketing is working. They've also licensed the name Lonely Planet to a TV program of the same name as part of their overall strategy. So answer of 9th is going to be TV program. अब TV program में याद रखना है, answer is going to be TV program ऐसे लिखना है. Any questions, any doubts? आप program लिखते हो PROGRAM is also fine, और PROGRAMME लिखा तो भी fine है. It is absolutely fine. You don't need to worry. But 7th का आंसर आएगा Australia. 8th is going to be marketing strategies and 9th is going to be TV program. Program में मैंने वापस बोलना चाहूंगा, आपको PROGRAM लिखा तो भी आंसर सही होगा. Any questions, any doubts, students? Understood, everybody? Okay. So shall we discontinue now? It's almost over now. Yeah, clear हो गया? Listening में थोड़ा clear हो गया. So you need to practice. जब आप practice करते हो तो ये चीज का ध्यान रखो, तो काफी आंसर्स सही पड़ेंगे. Okay. Thank you so much, students. Thank you so much. It was great. वापस मिलेंगे हम लोग. Very, very happy weekend and very happy Independence Day to all of you. Happy Independence Day. Yeah. Thank you, students. Thank you.